So join क्या है? Normally when we fetch data from more than one table, then we use join. Okay? तो जब भी हम लोग एक टेबल से ज़्यादा मतलब 2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल से डेटा फेच करते हैं, देन वी यूज जॉइंस. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ना? तो सपोज इफ यू यूज ओके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2. ओके, सिंपल इतना यूज करके. सो इट्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट करते क्या है? इट विल डिस्प्ले ऑल रोज एंड कॉलम्स ऑफ बोथ द टेबल. ओके, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं दोनों दिखाएगा. ओके, कैसे काम करता है? तो सपोज हमारे पास एक टेबल है टेबल 1. ओके, तो सपोज हमारे पास टेबल 1 है, दिस वन टेबल 1, इसको देखिए. ओके, टेबल 1, सपोज टेबल 2. टेबल 1, अच्छा टेबल 2. ओके, तो सपोज the serial number, name, then city, suppose id, then s name, suppose. Okay, then location. Okay, now suppose two tables. Now we have two datas or two rows. You can say city, suppose Pune 102, Ramesh, suppose Lonavala. Okay, now table 2, suppose हमारे पास I 102, maybe suppose nice location Lonavala. I 03. Okay, then suppose. Okay, now there are two tables. So to join the table we require at least one common field दोनों में. ओके, तो टेबल 1 टेबल 2, यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, सिटी. टेबल 2 आईडी, एस नेम, लोकेशन. ओके, so to join both the table we require at least one common field, otherwise we will get the Cartesian product. Okay, suppose इन दो टेबल का मुझे क्या करना है? Cartesian product करना है. So we use table 1 table 2. Now we get what we get? The output. So the output will be 1 2 3 columns, 3 columns. So in the output we get total 6 columns. Okay, that will have total 6 columns. Okay, this will be your output. Now we get 6 columns. So okay, so the first column will be table 1. So table 1 serial number, now name, then city, then id, then s name, then location. Okay, now the output कैसे काम करेगा? The first row of this table 0 1, then so okay, then the first row of this and first row of second table. So I 102. Okay, this one. Now next row. Okay, again first row, then its second row.
It means the first row of this table, okay, this one will fetch data first this first row, and again it will fetch data of this second row. ठीक है, it means we'll get the all possible combinations. Okay, so suppose यहाँ पर हमारे पास कोई रो है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, सपोज लाइक सेट, ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 2 3, ओके, सो यहाँ पर सेकेंड टेबल में सपोज हमारे पास है x y, okay, z. So x y z, these are rows, 1 2 3, these are rows. So in the output we get what we get 1x, okay, 1x. In the next row we get 1y, 1y. In the next we get 1z, 1z. Okay, when all row of the second table finished, okay, then second we start with the next value 2x, okay, in the same case 2y, then 2z, okay, then we start 3x, 3y, 3z. So we get how many rows? We get 3 into 3. We get total 9 rows. Okay, so I think ये clear होगा. So first row complete हो गया. Now we start second row. Okay, so second row 102. Then it will fetch data from this table. All. Okay, so it's a Cartesian row. So total how many rows? Total 4 rows. 2 rows, 2 rows. Okay, the first row is the headers, or we can say these are the fields. So we will not count serial number, name, city as a row. In the same case in table 2, ID, S name, location. These are the fields, okay, or attributes. So it's not a row, it's a structure or it's a part of the table. Okay, so row is what? Row which contains records or data. Okay, so यहाँ पर हमारे पास row क्या है? These are the rows. Okay, these are the rows. Clear? So total how many rows? 4 rows. The column serial number, name, city. So column will be added and the rows will be multiplied. Okay, so total we get the 6 column and how many rows? 4 rows. Okay, so let's see the practical. Okay, so we have table 1, table 2. Table 1, then table 2. Okay, so if we get the individual, let's start table 1. Okay, total 4 records. Select start from table 2. Okay, no records. So if we insert value in table 2, okay, suppose we insert 100,000 records. So insert into table 2 values. Okay, use table 2 ID. Suppose ID 1, the name. Okay, then email ID.
then phone number, then fees. Okay, then phone fees, sorry, fees, the numeric value. Again, with the problem, I use dot should be common. Okay. We insert one more record. Suppose let's say 102. Okay, we change duplicate record. Okay, because we enter email ID as a unit, so it's will add. Okay, now if we use select star from table 2, then we get 2 rows. Select star from table 1. Okay, so now if we use the Cartesian product, okay, Cartesian product यूज करेंगे तो मुझे कितने कॉलम मिलेंगे? हाउ मेनी कॉलम्स? सो द कॉलम विल बी एडेड. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns from the table 1, then 5 columns from table 2. So 6 plus 11 columns, and the rows will be multiplied. So the number of rows will be 4 into 2. So we get 8 rows. Okay, see, select star from table 1, column table 2. Okay, so total 11 columns and 8 rows. In the same case, suppose we use table 2 then table 1. So what will be if we use table 2 and table 1? What will be the difference? So now our table 2 columns will be on the left side and table 1 column on the right side. Okay, so first we will select the data from the table 2, then it will be added combined with the table 1. Okay, this reverse. So use करेंगे तो पहले रो. Okay, so यहाँ पर पहले टेबल 1 के कॉलम थे, अब उसके कॉलम को टेबल 2 को करें. Okay, because हमें टेबल 2 को करें. Okay, so now what will the join? So join now this particular table. यहाँ पर इस conditions पे we cannot apply the join. Why we cannot apply join? Because there is no common field in between these two tables. To join the table, we require at least one common field. Either ये यहाँ पर हो या फिर ये यहाँ पर कोई भी. Okay, so इसी concept को हम लोग क्या बोलते हैं? Foreign. Okay, so foreign key क्या करता है? It maintains the relationship between the tables. So to make the join, okay, or to get the actual exact data, what we require? We require one common field in both the tables. Okay, so यहाँ पर हमने ले लिया suppose serial number. Okay, ये 101, 102. Okay, it may possible 103. Suppose 102. Okay, now suppose I want to make join or मुझे क्या करना है? सपोज अशोक का लोकेशन दिखाना है. ओके, और द क्वेश्चन इज डिस्प्ले लोकेशन ऑफ ऑल records of. ठीक, सो अब इसका क्या मतलब हुआ कि टेबल 1 के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है उस सबकी लोकेशन दिखाना. ओके, so now when we practically देखेंगे, so we get okay 01 को हमने यहाँ पर देखा, so location भी क्या मिला हमारा. Now in that same case 102, but 102 यहाँ पर अवेलेबल है. इसका मतलब क्या कि 102 का लोकेशन अभी तक ऐड नहीं हुआ. ओके, so यहाँ पर हमारे पास 103, so 103 मिला. 103 पॉसिबल होगा. So practically possible, because if we use the foreign key concept, then it will generate error, because
this key is not available in the primary table. Okay, so it may be null. Suppose we use 102, then we get 1. So how we write? We write select location from table 1, table 2. Cartesian product में अप्लाई किया, इसके बाद में हम लोग where कंडीशन. ओके, सो इन केस ऑफ वेयर यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? सपोज इफ वी यूज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पर we get insert serial number. ये serial number किसका होगा? अब now there are 2 serial numbers, so the system will automatically map it with table 1 dot serial number, और यहाँ पर क्या करेगा? table 2 dot serial number, because दोनों फील्ड क्या है? इक्वल है, सेम है. सो एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए सिस्टम क्या करता है? इसकी मैपिंग कर देता है विद द टेबल नेम्स. सो नाउ आवर सिस्टम इसको कैसे ट्रीट करेगा? टेबल 1 डॉट सीरियल नंबर, मतलब द सीरियल नंबर ऑफ टेबल 1. इन द सेम केस यहाँ पर टेबल 2 डॉट सीरियल नंबर ऑफ टेबल 2. सो वी गेट 101, 102, 101 and 102. ओके, सो दिस विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो इसके आगे अब हम वेयर कंडीशन लगाएंगे. We get the location. Suppose ये 101, क्या अशोक की लोकेशन 101 की लोकेशन पुणे हो सकती है? नो. सो हम क्या करेंगे? We use the condition, join conditions. Okay. So in this case where अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर 101 है. Okay. ये 101, ये 101. It's okay. 102, 10, 01, 102. करेक्ट नहीं है. 102, 101 इक्वल नहीं है. 102 यहाँ पर है और 102 यहाँ पर. ओके, सो अब इसी को मुझे क्या करना है? कंडीशन में पुट करना है. ओके, सो अब हम लोग क्या लिखेंगे? वेयर टेबल 1 डॉट सीरियल नंबर इक्वल टू टेबल 2 डॉट सीरियल नंबर. ओके, सो ये आपको क्या हुई? ज्वाइन कंडीशन चाहिए. सो नाउ अब ये क्या दिखाएगा? इट विल डिस्प्ले नाउला एंड. ओके, सो ये कंडीशन क्या होती है? आपकी कंपल्सरी कंडीशंस होगी. सो व्हेनेवर वी यूज ज्वाइन, देन वी यूज व्हाट वी यूज ज्वाइन कंडीशन. सो ये आपकी क्या होगी? ज्वाइन कंडीशन होगी. ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समटाइम वी कॉल इट इक्वी ज्वाइन, बिकॉज हमने यहाँ पर इक्वल टू यूज किया. ओके, सो नेक्स्ट टेबल एरियाज. सिस्टम क्या करता है? समटाइम्स जब सपोज मुझे सीरियल नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले करना होता है. ओके, सपोज मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर डिस्प्ले करना होता है, दिस द लोकेशन एंड द सीरियल नंबर. सो विल नॉट सिंपली यूज द सीरियल नंबर. ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल लोकेशन कॉमा सीरियल नंबर यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज सिस्टम विल जनरेट एरर. Why system will generate error? Because there is no column of serial number. क्योंकि सिस्टम ने क्या किया है? सीरियल नंबर को मैपिंग कर दी टेबल 2. So we can use now. So in this case we use either table 1 dot serial number or we can use the table 2 dot serial number. Okay. So आपको जो भी कॉलम नेम यूज करना है आप कॉलम नेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Okay. For location is a single column. So we use the location as a now, or by default the location is already mapped with the table 2. ठीक है, लिखा हुआ नहीं, फिर भी आप यदि करना चाहें इसको सिमिलरिटी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? टेबल 2 लोकेशन कर सकते हैं यदि करना है तो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, बिकॉज लोकेशन एक ही है, देयर विल बी नो इश्यू. बट स्टिल यदि आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, कुछ है, तो आप उसको कर सकते हैं कि भाई आपको लोकेशन किससे लेना है? वी गेट the location from the table 2, serial number from table 1, from table 1 table 2 at table 1 dot serial number equal to table 2 dot serial number. Okay, so now अब suppose table 1 table 2, so sometime हम लोग क्या करते हैं? टेबल एरिया से लेते हैं, मतलब टेबल को कुछ अदर नेम दे देते हैं. ओके,
टेबल एलियास। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, सम अदर नेम, या फिर वी कैन से डुप्लीकेट नेम ऑफ टेबल। सो कई बार टेबल के नेम इतने बड़े होते हैं कि हमें टाइप करने में थोड़ा टाइम जाता है, सो द सेम वी कैन यूज। ओके, टेबल एलियास से निकले आपको क्या करना है, जहाँ आपने टेबल 1 लिखा अब उसको क्या बना दो, T1 बना दो। ओके, टेबल 2 नाउ वी यूज T2। ओके, कहने का मतलब है कि टेबल एलियास हमने कहाँ पर लिखना है, टेबल एलियास मतलब डुप्लीकेट नेम आपको रिसोर्स बना नहीं है कि नहीं मुझे टेबल 1 की जगह पर कुछ और यूज़ करना है, सो वी कैन यूज सम अदर नेम। ओके, जैसे एक ही पर्सन के दो नेम होते हैं बट दोनों एक ही पर्सन होते हैं। ठीक है, सो टेबल 1 एंड T1, यहाँ पर टेबल 1 एंड T1। ओके, बोथ आर द सेम, टेबल 2 एंड T2 बोथ आर सेम, बट अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, दैट अल्टरनेटली वी कैन यूज T1 इंस्टेड ऑफ टेबल 1। अब टेबल 1 भी यूज कर सकते हैं एंड T1 भी यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज एडवांटेज। सो वी कैन आल्सो यूज, यहाँ पर सपोज हम यूज करना है T2 डॉट लोकेशन, देन वी कैन यूज T1 डॉट लोकेशन serial number, where T1 dot serial number then T2 dot serial number। ओके, जिस क्या है, टाइपिंग टाइम सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समटाइम वी यूज टेबल एलियास। ओके, टेबल एलियास कहाँ पर होगा, फ्रॉम टेबल 1 then टेबल एलियास, टेबल 2 then टेबल एलियास। ओके, टेबल एलियास क्या है, इट्स ए डुप्लीकेट नेम और सम अदर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। ओके, तो दोनों यूज कर सकते हैं, टेबल 1 भी यूज कर सकते हैं और T1 भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये आपकी मेन कंडीशन है, ज्वाइन कंडीशन है, ज्वाइन में ध्यान रखना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो एग्जाम में आपसे क्या पूछते हैं, व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी एंड डिग्री। सो डिग्री क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रोज। सो सिस्टम क्या करता है, एग्जाम में क्या करते हैं कि जैसे आपको 2 टेबल्स गिवन होगी फ्रॉम क्वेरी, select star from table 1 table 2 and the question is कि what will be the output of the above query, आपका आउटपुट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन what will be the cardinality and degree of the output। देन आपको पता होना चाहिए कि cardinality and degree कैसे निकालते हैं। ठीक है, cardinality क्या होगी, नंबर ऑफ रोज एंड डिग्री विल बी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द आउटपुट। ओके,